Yeah. So hello everyone. तो आज विल डिस्कस ऑन वन टॉपिक. टॉपिक रहेगा कि टाइप्स ऑफ बिल्डिंग सिस्टम्स क्या क्या है, उसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे. एंड आफ्टर दैट अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना है, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है. विल स्टार्ट इन अनदर 1 minute. आई एम जस्ट चेकिंग द ऑडियो एंड वीडियो. अगर कोई लाइव है तो जस्ट टेल मी वेदर इट्स. या ठीक है. सो वॉइस इज करेक्ट. विल स्टार्ट नाउ. So I'm sharing my screen. तो हम ना विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ बिल्डिंग सिस्टम्स. ठीक है. सो नॉर्मल जो हमारे पुराने जो सिस्टम्स है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ लोड बेरिंग स्ट्रक्चरल सिस्टम्स, राइट. तो ये सारे आपके लोड बेरिंग के स्ट्रक्चर्स होते थे. वहां पे कोई आरसीसी का कॉलम, देयर वाज नो कॉलम्स एंड बीम. जो भी लोड होगा कंप्लीटली थ्रू stone we were used to we used to transfer it. That was called as a load bearing structural system. तो इसमें आपका जो वॉल का सब थिकनेस है, दैट वाज अ ह्यूज थिकनेस, राइट. तो उसके बाद नेक्स्ट व्हाट, पर इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसमें आप बहुत हाई स्टोरी बिल्डिंग लाइक लेट्स से G+3 G+4 स्टोरी बिल्डिंग आप नहीं बना पाते हो. एंड इसमें जो प्लान होगा, जैसे अगर आपका एक प्लान है, ओके, तो प्लान लेट्स से अगर आप एक ग्राउंड फ्लोर है एंड फर्स्ट फ्लोर है, तो यहाँ का जो प्लान है, अगर रूम का साइज यहाँ पे लेट्स से 10 फीट बाय 10 फीट का है, ऊपर भी आप 10 फीट बाय 10 फीट ही आपको बनाना था. यू कैन नॉट जस्ट कीप ऑन चेंजिंग द रूम साइजेस एंड ऑल. तो दैट वाज सम डिसएडवांटेज ऑफ द लोड बेरिंग स्ट्रक्चरल सिस्टम्स एंड ऑल. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट व्हाट वी हैड इज वुडन स्ट्रक्चरल सिस्टम. ऑफ कोर्स इंडिया में बहुत ही कम होते हैं. अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे, इवन टुडे दे यूज वुडन स्ट्रक्चरल सिस्टम. पर अगर आप कुछ रिसोर्ट में सब जाओगे, रिसोर्ट वाले सब ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स बना दे. सो ऑल दिस आर योर वुडन स्ट्रक्चरल सिस्टम. अगेन नॉर्मल बीम्स दे आर गोइंग टू यूज, एंड विद हेल्प ऑफ वुड एंड ऑल द कंस्ट्रक्शन यूज्ड टू हैपन. इसके बाद नेक्स्ट वट एवर वी यूजिंग नाउ डेज, ये सारे चीज आपके फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं. व्हाट इज फ्रेम्ड स्ट्रक्चर? इसमें क्या होगा, आपका फुटिंग रहेगा, फुटिंग के बाद आपका कॉलम रहेगा, कॉलम के बाद आपके पास बीम रहेगा, फिर स्लैब रहेगा. इस तरह से हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स लेट से G+1 G+2 G+5 15 20 25 स्टोरी के बिल्डिंग्स आप बना सकते हैं. इन लोड बेरिंग एंड ऑल दैट वाज नॉट पॉसिबल. इन द सेम वे यहाँ पे अगर मान लो आपको लेट से आपके आप लेट से फाउंडेशन है, आपका ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में लेट से आपको एक कॉलम यहाँ पे लगाना है, तो आप यहाँ पे एक और लेट से प्लांटेड कॉलम और लेट से फ्लोटिंग कॉलम आप लगा सकते हो. और लेट से आपको यहाँ पे एडिशनल एक और रूम आपको ऐड करना है, मान लो कैंटिलीवर पोर्शन आपको देना है, यू कुड हैव गिवन अ कैंटिलीवर पोर्शंस एंड ऑल. इन लोड बेरिंग एंड ऑल इट वाज नॉट इजी टू गिव अ कैंटिलीवर पोर्शंस एंड ऑल. तो आजकल जितने भी बिल्डिंग्स आप बनाते हो जहाँ पे आपका कॉलम बीम स्लैब स्टेयरकेस आप यूज करोगे, ऑल दोस आर योर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स एंड ऑल. ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट वन व्हाट वी हैव इज अ फ्लैट स्लैब स्ट्रक्चरल सिस्टम. जितने जितने जैसे जैसे बड़े बड़े आपके व्हाट इज दैट कमर्शियल बिल्डिंग सब है ना, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, फ्लैट स्लैब यूज करेंगे. इसमें क्या होता है, कॉलम तो रहेगा पर आपके पास कोई बीम्स नहीं रहेंगे. यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे बीम्स है, राइट, पर यहाँ पे कोई बीम्स नहीं रहेगा. बीम विदाउट अ बीम व्हाट विल डायरेक्टली हम यहाँ पे ड्रॉप पैनल को यूज करेंगे. ओके. एंड उसके ऊपर आपका स्लैब आएगा. तो इसको क्यों यूज करना है, जब भी आपको दो कॉलम के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए, अगर आप लेट से मेट्रो स्टेशन में जाओगे, या लेट से अगर आप बड़े बड़े मॉल्स में जाओगे, अगर आप नीचे पार्किंग एरिया सब देखोगे ना, तो आपको दो कॉलम, अगर एक कॉलम इधर है तो दूसरा कॉलम इधर होगा, तो आपको इनसाइड का जो मूवमेंट है ना, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट. पर मेरे को अगर स्पेसिंग बढ़ाना है, तो इन दैट केस व्हाट आई विल डू इज, मेरे को इस दोनों कॉलम को दूर दूर रखना पड़ेगा. एंड इन दैट केस एंड ऑल वी कैन गो विद स्ट्रक्चरल सिस्टम. ये जो आपका पंचिंग शेयर होता है, टू रेजिस्ट द पंचिंग शेयर वी यूज टू will increase the depth of the slab and all. अगर पूरा डेप्थ आप इंक्रीज करो, इट विल बिकम अनइकोनॉमिकल. जहां पे भी आपका कॉलम है, व्हाट विल हैपन, वहां पे पंचिंग होता है. फॉर एग्जांपल, सी इफ दिस इज माय कॉलम एंड इफ दिस इज माय स्लैब, अगर इस तरह से पंचिंग होता है, इट विल ट्राई टू पंच लाइक दिस. तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, विल इंक्रीज द थिकनेस ऑफ दिस मच एरिया. तो दैट इज वाई हमने क्या किया, जो स्लैब का थिकनेस है ना, इतना एरिया में हमने इंक्रीज कर दिया. सो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट इन द आपका फ्लैट स्लैब सिस्टम में. ठीक है. सो दिस इज अ फ्लैट स्लैब सिस्टम. जितने भी आप मॉल्स में जाते हो ना, वहां पे हम यूजुअली कमर्शियल बिल्डिंग्स एंड ऑल वी गो विद द फ्लैट स्लैब सिस्टम्स एंड ऑल. इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम्स. अगेन जब आप
कुछ बड़े-बड़े हॉल्स बनाते हैं, कन्वेंशनल हॉल्स सब बनाते हो, और लेट्स से इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग सम हाई राइज बिल्डिंग्स एंड ऑल, जहाँ पे ज्यादा हेवी लोड्स आ रहे हैं, इन दैट केस व्हाट वी डू, हम रीइंफोर्समेंट तो लगाएंगे, पर इसके साथ साथ विल यूज प्री टेंशनिंग एंड द पोस्ट टेंशनिंग मेथड। प्री टेंशनिंग का मतलब ये सब आपके टेंडेंस होते हैं, दिस आर द टेंडेंस। जो आपका रीबार होता है ना, उसका जो एक मिनट, या जो आपका रीबार है उसका जो स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो होता है आपका, लेट्स से कितना होता है, 500 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, 550 भी अवेलेबल, थोड़ा 600 भी अवेलेबल है। पर ये जो आपके टेंडेंस होते हैं, दे हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ लेट्स से 1500, 2000 एंड ऑल, 2000 एंड ऑल। सो इन दैट केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, we can use such kind of tendons and all for pre-tensioning and post-tensioning. Pre-tensioning matlab you will tension or you will stress the tendons first and then the concreting will be done. Post-tensioning mein kya hoga, first आप concreting pour karoge, then later you are going to pull the tendons and all, and based on the bending moment we are going to arrange all these systems and all. ठीक है, अगेन ये सारे चीज बड़े बड़े बिल्डिंग्स मॉल्स हो गए लेट्स से, और जहाँ पे कन्वेंशनल हॉल्स है वहां पे हम यूज करेंगे। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज अ प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चरल सिस्टम्स एंड ऑल। तो ये सारे आपके प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर जो इस तरह से प्रीकास्ट पैनल्स एंड ऑल फैक्ट्री में बनते हैं, एंड देन यू ब्रिंग दिस ऑन द साइड एंड यू डू द इरेक्शंस एंड ऑल। So again, very few companies are doing that and all. In Hyderabad and all, there are few companies those are into the manufacturing and execution of the precast structures and all. नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चरल स्टील सिस्टम। अभी तक जितने भी हमने डिस्कस किया था, एवरीथिंग वाज योर क्या, कंक्रीट के रिलेटेड। ये सारे आपके स्टील स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज अ फुट ओवर ब्रिज, एफओबी एंड ऑल। तो वहां पे हम स्ट्रक्चरल स्टील को यूज करेंगे। ये सारे आपके एलिवेशन ब्रेसिंग्स होते हैं। सो इन दिस वे वी ट्राई टू कंस्ट्रक्ट दिस काइंड ऑफ बिल्डिंग्स एंड ऑल। ये ब्रिजेस देखो, ये सारे ब्रिजेस आपके स्टील के स्ट्रक्चर से बनते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज अ प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग। ये भी आपका स्टील का ही स्ट्रक्चर है, पर यहाँ पे बेस्ड ऑन योर बेंडिंग मोमेंट एंड ऑल, व्हाट वी विल डू इज विल ट्राई टू डू द इरेक्शन ऑफ द राफ्टर, द कॉलम, फिर पर्लिन्स आएंगे। जितने भी बड़े बड़े वेयर हाउसेस है, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट, इनके बड़े बड़े वेयर हाउसेस है, या बड़े बड़े जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है लाइक यामाहा हो गया, होंडा स्कूटर्स एंड ऑल, उनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बड़े बड़े प्लांट्स चाहिए। इन दैट केस नॉर्मल आपका फ्रेम स्ट्रक्चर एंड ऑल विल नॉट वर्क देयर। तो इन दैट केस वी गो विद सच काइंड ऑफ स्टील स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग। अगेन ये सारे कॉलम्स राफ्टर्स विल बी फैब्रिकेटेड इन द अपना फैक्ट्री में, एंड देन विल ब्रिंग इट टू द साइट एंड विल डू द इरेक्शंस। ठीक है। एंड नेक्स्ट व्हाट एवर इज ट्रेंडिंग नाउ डेज, दैट इज अ माइवन एंड ऑल। तो माइवन में क्या होगा, इन माइवन ये आपका नॉर्मल फ्रेम स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलम लगाएंगे, बीम लगाएंगे, स्लैब लगाएंगे, फिर इसके बाद ये ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क सब उसके बाद होगा। माइवन में क्या होगा, वन इज आपका कंस्ट्रक्शन बहुत स्पीड होगा। सेकंड, आपके जो वॉल सब बनाने का, ये जो आप ब्रिक वर्क, ब्लॉक वर्क करने का कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही साथ आप पूरा फ्लोर करोगे। जैसे 7 से 12 दिन का एक साइकिल होता है, डिपेंड्स, आप एक एक फ्लोर 7 से 12 दिन में आप कर सकते हो, एंड देन यू कैन रेज द फ्लोर्स एंड ऑल। सो दैट इज समथिंग फास्ट नाउ। जैसे आप जितने भी हाई राइज बिल्डिंग्स आप देखोगे आजकल, people are adopting my one constructions and all. So my one is a technology, that's a alu form we call that. Okay, so based on that you can do the executions and all. There is a good scope also, इस फील्ड में अच्छा स्कोप भी है। ठीक है। So these were the different building structural systems that you should understand and all. ठीक है। नाउ अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना है, you can ask your questions here, shall be there। तो अगर आपको कुछ डाउट है, कोई चीज अगर आपको पूछना है, you can ask anything, so that you'll have a good knowledge। ठीक है। I'll just wait for some time। So if somebody is interested to ask any questions, you can ask। Okay, there are 5 people. So if anyone has any doubt, okay, okay, no questions। ठीक है, चलो अगर कोई questions नहीं है, we'll take some other topic and discuss। ठीक है। एंड जितने भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आप लोग आ रहे हो, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, सो दैट विल गेट गुड नॉलेज फ्रॉम दिस चैनल। एंड ट्रांसफरिंग लेवल्स, हाँ ओके, ट्रांसफरिंग लेवल्स विल, जब मेरा साइट इंजीनियर का कोर्स अपडेट हो जाएगा ना, उसमें मैं ऐड करूंगा ट्रांसफरिंग लेवल। द बेसिक थिंग्स आई एडेड इन माय कोर्स, हाउ टू सेट अप द ऑटो लेवल एंड ऑल।
या अदर देन दैट द ट्रांसफरिंग लेवल्स हम ट्राई करेंगे, बट अगेन विल सी अगेन, बिकॉज जब आप बड़े बड़े कंपनी में काम करोगे योर सर्वेयर विल कम टोटल स्टेशन से लेके आके ट्रांसफर करके लेवल देगा, फिर भी आई ट्राई टू कवर दिस इन द साइट एग्जीक्यूशन के कोर्स में, ठीक है। ट्रांसफरिंग लेवल मतलब क्या करना है, नॉर्मल जो बीम कॉलम स्लैब स्टेयरकेस का है वो सारे चीज मैंने अपने बेसिक कोर्स में कवर किया है साइट एग्जीक्यूशन में, पर जब हम इस बार री रिकॉर्डिंग करेंगे और भी अच्छे तरीके से आपको मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो विल डू दैट, आई रिटर्न इट, जब हम नया रिकॉर्डिंग करेंगे ना, आई एक्सप्लेन हाउ टू ट्रांसफर द लेवल्स एंड ऑल, ओके फाइन। या संदीप, गुड इवनिंग। या सो अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन, ओके देयर आर 9 पीपल, अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप पूछ सकते हो। इफ नॉट, व्हाट आई विल डू इज मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बता दूंगा, क्योंकि हम अभी दिसंबर 15 में हम एक ऑफर लॉन्च कर रहे हैं। सो दैट विल बी, सर प्लीज मेक अ वीडियो अपॉन स्टील स्ट्रक्चर, ऑलरेडी आई मेड अ वीडियो यार, तुम लोग देखते नहीं हो, देखो आई विल शो यू दैट steel structure is already a video, you just have to watch it. See this entire course is on steel structure only. See this particular course जो है ना, स्टील स्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन एंड पीबी का कोर्स है, तो ये वाला कोर्स आप देख लीजिए, इसमें और भी इसे वन ऑफ द बेस्ट कोर्स यार, मैं आपको बताऊंगा। अभी रिसेंटली मैंने इसमें सारे चीज ऐड की, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कोर्सेज अवेलेबल, यू क्लिक ऑन द हिंदी लैंग्वेज, तो ये पूरा हमने स्टील स्ट्रक्चर का कोर्स किया। स्टील स्ट्रक्चर मतलब प्री इंजीनियर बिल्डिंग, स्टील व्हेन आई से स्टील स्ट्रक्चर इट्स अ प्री इंजीनियर बिल्डिंग व्हिच इज ट्रेंडिंग नाउअडेज। तो ये सारे चीज, इतने बड़े शोरूम का कंस्ट्रक्शन मैंने आपको कवर करके दिया है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन टेक, एंड मेनी स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन द कोर्स आल्सो। आप इस कोर्स में एनरोल करिए, डोंट, ये आपको अब कुछ दिन के बाद ना दिसंबर 10 से इसमें ऑफर चलेगा, यू कैन बाइट फॉर 1000 रुपीज इंस्टेड ऑफ 1500। आप मेरा ऐप डाउनलोड करके रखिए, इट्स अ वेरी वेरी गुड कोर्स, जहाँ पे मैंने मैक्सिमम चीजें आपको इस तरह से देखो पूरा प्रैक्टिकली साइड से एक्सप्लेन किया, दिस इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कोर्स, तो वी हैव कवर्ड दोस थिंग्स अबाउट द स्टील स्ट्रक्चर्स एंड ऑल। इसका ड्राइंग कैसे पढ़ोगे, स्टील का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, एवरीथिंग आई हैव कवर, ओनली द थिंग इज यू हैव टू एनरोल इन द कोर्स, दैट्स इट, बिकॉज इन यूट्यूब एंड ऑल सब कुछ आपको नहीं मिलने वाला है। या I'll answer your questions. Okay, these are the steel structure course. Okay, तो आपको मिल जाएगा से इस तरह से मैं आपको जब पढ़ाऊंगा, एवरीथिंग प्रैक्टिकल फ्रॉम द साइट आई एम गोइंग टू टीच, एंड आई एम द ओनली पर्सन आई ऑलवेज टेल यू, क्योंकि आपको बाकी लोग इस तरह से साइट में जाके वीडियो रिकॉर्डिंग करके नहीं करने वाले हाँ? हम्म, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर थिंग, आप एक बार मेरे ऐप को डाउनलोड करके इसको देख लीजिए। बाकी दे हैव मेनी स्टूडेंट्स आस्क्ड द क्वेश्चंस, विल गो बैक टू द क्वेश्चंस। Okay, yeah, Sandeep sir, please make a video on steel structure. I've already done that, you can enroll in the course, that's the thing. So when courses are going to re-updated, any particular date, see I'll not announce the date, I'll tell you. Actually at present there are two construction sites which are supposed to start. One is apartment construction, I'll re-update, already I have a video. There are two building, one is G+1 and G+3 building, central and marking we are supposed to start. So once it is started, I'll do the recording, and then after that मैं उसको re-recording करूंगा। वो actually होना था, पर यहाँ पे बहुत बारिश हो रहा है, so they have not started the execution, but probably my December 20 के बाद मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा। तो लगभग 1 से 1.5 महीने का रिकॉर्डिंग चाहिए, बिकॉज अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये वाला जो मैंने पढ़ाया था उसी कोर्स का मैंने बना के रखा था। सो फ्रॉम हियर विल ट्राई टू कनेक्ट, ये सारे चीज मैंने लास्ट टाइम भी कवर किया था, बट नाउ वी विल ऐड लॉट ऑफ न्यू टॉपिक्स इन दिस। सो लगभग 2 महीने का टाइम चाहिए, एंड इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट कोर्स दैट यू विल एवर टेक इन योर लाइफ। बट टाइम लगेगा, 2 महीने का तो टाइम लगेगा, उसमें बहुत कुछ मेरे को कवर करना है। एंड आई थिंक लास्ट टाइम मैंने आपको बोला भी है, अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन है, विल टेक टाइम, तो मैं टाइम अनाउंस नहीं करूंगा। अगर मैं दूंगा आपको टाइम, मान लो आप पे प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होगा, फिर आप लोग फिर पूछेंगे सर आपने बताया था दिसंबर 20 को नहीं हो रहा है, सो आई विल नॉट गिव एनी टाइम, बट आई विल डू दैट, डोंट वरी, ठीक है। Yeah, so premium done. Sir, in site engineer course, this is a high-rise building. No, no. See, my site engineer course was actually a G+3 commercial building I had covered. That was almost 2 years back. So after 2 years, I also learned many things. Now what I'll do is I'll cover the same building again. I'll cover 3, 4 projects. High-rise, I'll try to add topics, and again, say sequence of construction always remains the same. हाई राइज बिल्डिंग करो, G+1 करो, अगेन यू विल डू एक्सकवेशन ओनली। ओनली द थिंग इज हाई राइज बिल्डिंग में आपका राफ्ट फाउंडेशन आता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर विल बी आइसोलेटेड फुटिंग और कंबाइंड फुटिंग। सो आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ये वाला व्हाट इज दैट
राफ्ट फुटिंग का, फिर राफ्ट और पाइल का भी आता है, वो सारे मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते चले जाऊंगा। एंड माय स्टूडेंट्स आर सेंडिंग मी फ्यू वीडियोस फ्रॉम दुबई एंड ऑल। मेरे कुछ 2-3 स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को वीडियो सेंड करते हैं दुबई के कंस्ट्रक्शन। दोस थिंग्स आई ऐड यू एंड ऑल्सो आई गिव एन आइडिया कि कैसे कैसे काम होता है। बिकॉज देखो हाई राइज बिल्डिंग 3-3 साल लगते, 3-3 साल मेरे को कोई कंपनी वाले जाके रिकॉर्डिंग करने अलाउ भी नहीं करते, ठीक है। बट अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन में कवर करूंगा। लास्ट टाइम आई शोन यू, मैं आपको दोबारा चाहिए तो एक बार आई शो यू दैट, ओके दोबारा आई शो। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स, पर ना वो ऐसा मिलेगा भी नहीं ना, सारे लोग अलाउ भी नहीं करते वीडियोस निकालना एंड ऑल्सो। बट लास्ट टाइम आई शो, ऑफ कोर्स एवरी टाइम आई शोइंग यू द सेम थिंग, बट स्टिल वट एवर आई शो यू। तो ये वाला अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन विल कवर, ओके। ये वाला अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन है, इसको हम कवर करेंगे। ऑलरेडी पूरा रेडी है मेरे पास, बस मेरे को रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अनदर 2-3 प्रोजेक्ट्स टू स्टार्ट साइमल्टेनियसली। So this is the level of content you'll be getting in my site engineering. It's a basement plus ground plus 3 story का अपार्टमेंट है कंस्ट्रक्शन, जिसमें 3-4 ब्लॉक्स आएंगे। ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर बी, still going on. The construction is still going on. So this construction will finish in 2025 end. तो अभी भी 2024 चला, अभी 1 साल चाहिए मेरे को प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए। पर जैसे जैसे जितना भी काम हुआ है ना, मैं अपडेट करता चला जाऊंगा। बट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ न्यू थिंग्स एंड ऑल, ओके फाइन। सर इन साइट इंजीनियर कोर्स इट इज हाई सर, या आकाश कुमार हाई। Sir, I will spit truth. I am over with this career very low. See again, it's all your mindset problem. I cannot do anything. Already made lot of videos. The problem is अगर आप छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करोगे, तुम अपने नॉलेज को अपग्रेड नहीं करोगे, then your salary will be very low. First, that is the first thing. So civil engineering is not site engineer. What happens is most of the people site start their career with the site engineer. I'm very happy for that. तो जैसे आप साइट पे 1 साल काम करोगे, you should move towards the quantity surveying का फील्ड, प्लानिंग का फील्ड, you become a project coordinator. ये सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे you get a good salary and all. Unfortunately, you people don't do all these things and you blame it. I agree that सिविल में स्टार्टिंग का सैलरी कम होता है, but it's not the reality. Okay. द प्रॉब्लम इज आपको एक्सपोजर का नॉलेज ही नहीं है। बिकॉज व्हाट, जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात करता हूँ, उनको साइट इंजीनियर के अलावा कोई फील्ड पता भी नहीं। इंटीरियर इज अ गुड फील्ड, आप इंटीरियर फिट आउट में जाओ। अगर आपको बीआईएम में जाना है तो आप बीआईएम में चले जाओ। सो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस दैट यू हैव। अनफॉर्चुनेटली यू डोंट नो द ऑप्शंस एंड आई हैव मेड लॉट ऑफ वीडियोस वेयर आई हैव गिवन यू लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मेरे कितने कितने स्टूडेंट्स विद 2 year ऑफ एक्सपीरियंस अर्निंग 40-45,000 सैलरी एंड ऑल। सो इट्स पॉसिबल। साइट इंजीनियर में थोड़ा टाइम लगता है, बट एट द एज ऑफ 22, 23, 24 यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ सैलरी ऑफ 50-60 हजार। तुम्हारे पास वो नॉलेज नहीं है, क्यों somebody will pay you a salary यार। You just have to think all these things, just don't go behind all this I mean 22 साल 23 साल की एज में आप सीखो, सीखो 2-3 साल अच्छे से सीखो, अच्छे कंपनी में काम करो। पर आई वुड नेवर नेवर रेकमेंड यू पीपल टू वर्क इन अ स्मॉल फर्म। आपको अगर कहीं पे भी जॉब नहीं मिल रहा है, आप लोग क्या छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में काम करते हो गांव की तरफ, जहाँ पे G+1 G+2 बिल्डिंग बनाते हैं, पर वहां पे होता है कि तुमको 12,000-15,000 का नौकरी दिया जाता, सैलरी दिया जाती है। तो आप लोग 2-3 महीने काम करके शिफ्ट कर लो ना, उधर से बड़े सिटीज में आ जाओ। पर आप लोग क्या करते हो, वहीं पे पड़े रहते हो, 1-1 साल 2-2 साल वहां पे काम करोगे। तुम्हें 30-40 हजार का नौकरी कोई बंदा गाँव की तरफ नहीं देने वाला है, नहीं देने वाला है, नहीं देने वाला है। तुमको 15,000, नेक्स्ट महीने वो 18,000 करेगा, अगले साल 20,000 करेंगे। देन यू कम एंड कंप्लेंट ऑल these things. That's it. So I've made a lot of videos where people are earning pretty. Last time I made one video. One of my cousin, I have worked in Gurugram based builder for 2 years. Then fine, you go towards the planning field ना। आपने साइट पे 2 साल काम किया, आप now learn planning, learn MS project, Primavera, go for a bigger company, right? So that is how it is. In Gurugram, you have this DLF company and all. Try to apply for a DLF company. Opportunities are there. If you keep on complaining, then see, if you keep on complaining, then you'll attract all the negative things only. But I agree that what you're telling is correct. But it you should know ना। देखो, you just think, अगर आपके हिसाब से सिविल में बॉस, then all people should have left civil field na। Then why all people are still there in the civil field only? Site engineer I agree, but after that now learn and go for this field na। प्लानिंग वाले फील्ड में चले जाओ, क्वांटिटी सर्विंग वाले फील्ड में चले जाओ, अप्लाई फॉर गुड गुड कंपनीज, डीएलएफ में जाओ, लोधा में चले जाओ। so that will take good knowledge, आपका एफर्ट्स भी चाहिए ना। डोंट वर्क अंडर स्मॉल फर्म। से इन कंस्ट्रक्शन में तीन टाइप के कंपनीज होते हैं। वन इज दैट वेरी स्मॉल फर्म, जो छोटे मोटे G+1 G+2 बिल्डिंग करते, वहां पे कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप 3-4 महीने काम करो, छोड़ के दूसरे। सेकंड इज मिड मिड फर्म, जो एटलीस्ट G+5 G+7 G+8 बिल्डिंग्स अपार्टमेंट टाइप बनाते, पर वहां पे भी ज्यादा सैलरी नहीं होते। हु आर द टॉप हु आर द टॉप पीपल जैसे प्रेस्टीज में जाओ, इस प्रेस्टीज में चले जाओ, सलारपुरिया सत्वा एंड ऑल, दैट इज लिटिल हाई। पर अगेन
साइड से यू गो फॉर अदर फील्ड, वंस यू वर्क इन साइड फॉर 1 year, गो फॉर अदर फील्ड, लाइक लेट्स से प्लानिंग में चले जाओ, क्यूएस में चले जाओ, या गुड यू वर्कड इन ईएमआर, नाउ गो फॉर एटलीस्ट क्यूएस का जॉब में चले जाओ ना, गो फॉर गो फॉर अ प्लानिंग वाला जॉब। वो दोनों नहीं चाहिए तो यू कैन गो फॉर बीआईएम ऑल्सो, you can go do that also, no, but if you don't want anything, you can leave the field and go for other field, because I am no one to tell you that stay in civil only, but whatever from my experience I'll tell. So if not, if you are not really interested and all, you leave the job and go, that's it, simple na. No one is forcing to stay in civil only, it's your life, you have to take a decision. I can just guide you like a option hai karo, nahi karna hai to it's your life, you can take a decision, simple. Okay, yeah, EMR is a good company now. Again, go for a QS job, go for a planning job and all. It's not like that. It's all your individual perspective, and this is my perspective. If you have something else, yeah, you can go for a better company. Simple. No, there is no point telling that this, that, and all. It's your perspective. That's how it is. Okay, fine. Is there any course on commercial big buildings? Yeah, see, commercial big buildings, again, end of the day, you should understand, sequence of construction remains the same, यार, ठीक है। एंड सब कुछ नहीं पढ़ा सकते, कैसे पढ़ा सकते सब कुछ मेरे को भी नहीं आता, सब कुछ सबको नहीं आता है, बट अगेन यू शुड अंडरस्टैंड कि सीक्वेंस ऑफ, हाँ, I was a junior structure engineer, not a site one. ठीक है, then if you're junior structure engineer, then upgrade your knowledge, and then you can even try for a BIM job. Again, you should find opportunities here. So I'll tell you few things. Okay, he's a very good. He told that I was a junior structure engineer, not a site one. Now I'll show you one reality. Okay, just because you asked, no, I'll show you one reality. See here. When I show you through this YouTube, these things, no, only then you'll understand. Otherwise, just read out this. Hi, I'm hiring structural design coordinator. Okay, must have 4 years of experience in structural industrial steel design using STAD. Must ready to join immediately. What is the salary is offering? 12 lakh per annum. You told that you have 2 years of experience. They are paying 37. That's fine. But here somebody is paying 12 lakh per annum plus accommodation with 4 years of experience, and that is telling come to Bangalore and work. Now you tell me. Now you have to tell me whether there is no opportunity. There is opportunity. You should find the right people. You should connect with the right people. That's it. Okay. So there are people working. You should connect. You just can speak to me. Insane Gamer Fist. You can. I mean, if you want, you can speak to me. I'll tell you few courses. At the end of the day, I'll tell you few training institutes or courses. Try to do that. You can go in structure engineering. Is a good opportunity also. आप कर सकते हो. Only the thing is, you should see which company you're working, where you're working. इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में आपको ज्यादा पैसा होता है, ओके, कंपेयर टू योर छोटा मोटा एंड ऑल। हाँ, ओके, the opportunities are okay, fine, yeah, you I mean there's no point in arguing with you, it's up to your life, yeah, you can do whatever you want to do, okay, there's I mean uh, so it's an individual thinking, I cannot help you much. Yeah, you can do whatever you want to do in your life, there's no more further discussion is not required on that topic. Yeah, is there any courses on commercial big buildings? uh, हाँ, अगर वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखो सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम ही होता है। एक्सकवेशन, पीसीसी, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन। कमर्शियल में क्या होता है, आपके फुटिंग का साइज, जैसे कॉलम का साइज, बीम का साइज थोड़ा ज्यादा होता है कंपेयर टू, अगर आप G+1 G+2 बिल्डिंग बना रेसिडेंशियल का, 230 बाय 450 का डेप्थ, 230 बाय 600 का डेप्थ, ये सारे चीज होता है। अगर कमर्शियल में जाओगे तो बड़े बड़े कॉलम्स रहेंगे, बड़े बड़े बीम्स रहेंगे, पर अगेन करने का मेथड, कॉलम होने के बाद ही बीम होगा, बीम होने के बाद स्लैब होगा। Commercial may what will happen, sometimes you'll have a PT slab, post tension slabs and all will come. So that we'll try to cover. Of course, everything I also don't know, but whatever is possible from my side, I'll try to cover it. Okay. Okay. Pile foundation video, please, from start to end. Pile foundation, there's no video as such, but the concepts like what is under rim pile, those things I've covered in my drawing reading ka course. अब मेरे drawing reading का course से those things you can learn, concepts you can learn. Pile foundation in my place, we usually don't do a pile foundation because we have a good soil. Normal isolated and combined footing काफी हमारे area में. Just in case अगर future में मेरे को कोई videos मिलेगा pile foundation के ऊपर, I'll definitely add it in my course. Again, same here, like hospital, colleges and all, sequence of construction remains the same. Okay, if you know to read the drawing, if you know how to handle the site and all, आप कर सकते हो, no problem. Yeah, I was a junior structure engineer. Yeah, I already explained that. How to manage site work? How to manage site work means presently आप क्या कर रहे हो? Sir, what all should we know to open our own consultancy? To open our own consultancy, of course, first is आपको AutoCAD में plan बनाना आना चाहिए.
वास्तु के हिसाब से प्लानिंग करना आना चाहिए, प्लान बनाना आना चाहिए एंड 3D एलिवेशंस आपको बनाने आना चाहिए। देन आपको साइट एग्जीक्यूशन का नॉलेज होना चाहिए, एस्टिमेशन करना आना चाहिए, बीओ की प्रिपरेशन आना चाहिए। इतना आ गए तो दैट इज काफी है। देन आप क्या करो, आप क्या करो, जो बंदा कंसल्टेंसी चला रहा है उसके अंडर एक या दो साल मिनिमम 2 साल काम करो। जब आप 2 साल काम करोगे, यू यू लर्न प्लान कैसे बनाना, म्युनिसिपालिटी में कैसे प्लान्स को पास करना है, 3 एलिवेशन कैसे बनाएंगे, क्लाइंट से कैसे मीटिंग किया जाता है, क्लाइंट्स को कैसे हैंडल किया जाता है, एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है, एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं, इंटीरियर में क्या क्या नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स यू लर्न इन 2 ईयर। अगर आप 2 साल में लेट्स से अगर आप 4 से 5 प्रोजेक्ट्स पिक कर लोगे, इतना तो आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा। And after that, with the same thing, you can start your consultancy. But before starting the consultancy, make sure that you have a little bit of savings, क्योंकि जब आप जॉब छोड़ोगे, डायरेक्टली आप जब स्टार्टिंग करोगे तो होता क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज आपको डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे, तो आपको थोड़े पास थोड़ा सेविंग्स रख लो एंड ट्राई टू कनेक्ट विद द लोकल कॉन्ट्रैक्टर एंड आर्किटेक्ट्स इन योर प्लेस। Try to tell them that I can do a plan for you, I can take up the construction works and all. So you should build a network. It's all about building a network and all, and then slowly it has to go. Okay, it's not like from day one you'll get a project. आप इस तरह से प्लान करो, वर्क अंडर समवन, ऑलवेज यू हैव टू वर्क अंडर समवन इज ऑलरेडी डूइंग द सेम थिंग इन द फील्ड, एंड फिर इसके बाद धीरे धीरे यू कैन स्टार्ट इट, स्लोली यू कैन स्टार्ट इट। ओके, फाइन। Yeah. So Hale, I told you know what all the I'm a fresher diploma civil engineer. Yeah, fine. If you're a fresher, try to apply for a job. Go for a, let's say, a side job. आप apply करो अच्छे जगह पे. Go for a QS job. You can apply for some good jobs and all. Okay, that's how it is. These opportunities are very rare and application is process so saturated. Again, it's a individual's perspective, so I will not speak much on that. Opportunities are there all the field. You have to just look for the opportunity. That's it. So that's how it is. Okay, so it's a individual's uh, choice and individual's thinking. So I shown you one opportunity, so I can show you hundreds of opportunities. I can show you people working in Atkins and other field, those are earning 12 to 14 15 lakh. Few of my friends are working in WSP and also everything is possible. Only thing is you have to find for the opportunities, that's it. Okay, nothing else. Yeah, और कुछ क्वेश्चन है किसी को? Those are earning 12 to 14 15 lakh. Few of my friends are working in WSP. Okay. Yeah, 14 people are there, 14 people are online. अगर आपको और कुछ पूछना है. So I'm a quality inspector in a consultancy since 5 months. How can I increase my salary? 60K only. Hmm. I'm a quality inspector in a consultancy since 5. Array, see how you will increase your salary. You should apply for other company. You have to change the company. And first you see what are the skills that you are good at. And first you understand what is your strength and what is your weakness. What is the weakness? If there is some weakness, let's say agar aapko English is a, if you're not good in speaking English, or let's say you don't know many things about the construction, try to learn that, upskill that knowledge. Whatever weakness you have, you could turn that into your strength. And then look for a companies who is paying good. Let's say अगर आप 16 पे काम कर रहे हो, look for a company जो 20 25 30 हजार दे रहे हैं, and try to connect with those people जो उस कंपनी में काम, उनसे कनेक्ट करिए, उनके वेबसाइट्स में चले जाइए, देखो वो क्या क्या प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, देन यू हैव टू गो एंड अप्लाई फॉर दोज जॉब्स एंड ऑल। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, दैट्स इट, यू हैव टू कीप ऑन अपग्रेडिंग। Try to see you should try to someone, अगर आपका सैलरी 16K, see somebody who's earning 25. Now you speak with the guy who's earning 25, ask him how did you get a 25K salary, or which company you're working. Then you connect with them, apply for those companies. This is what you're supposed to do. It requires research and it's a time consuming process. फटाफट फटाफट कुछ नहीं होता है, टाइम लगेगा। ऐसे करोगे धीरे 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 अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, फाइन। I have a freelancing work experience 3 to 4 year now. I want to join a company. How can I do? Apply for the company. I have a freelancing work experience. Yeah, see, if you have experience, then it's all about you have to apply for the companies here. Connect people on LinkedIn. Look for jobs in Naukri.com and all. You will get jobs and all. No, it is no problem in getting a job. You have to connect. First, you identify which company you want to work, which city you want to work. Let's say you want to work in Mumbai. Let's say now identify which are the companies freelancing work in what field you have a freelancing work. Let's say if you have a freelancing work experience, structure designing. So now identify 50 companies in Mumbai which are into the structure designing. You go to all their this thing, what is that website? There is a careers page. Apply in the careers page. There will be latest openings. If there is no openings, they'll have a resume. They'll have a HR this thing email ID.
drop a mail to them telling that I'm interested to work in a company. And also people those are working in those company, connect them on LinkedIn. Sometimes they also post this thing, job they post, उनको apply करना. You have to connect with the people. These are the ways of getting a job. Okay, nobody will come and give, okay, I have 3 to 4 year experience, come and take job. Nobody will give. You have to go and approach people. That is a way where you can do that. Okay, fine. B ki sarkar. So I want to become a RCC consultant. What do you mean by RCC consultant? Sir, is BIM tools have a good future in India? See, future is there in BIM and all. I already made a video and all. So you can even work in BIM field also. See, it's totally up to you. You can work in any field. Okay, BIM is also good. Again, BIM has lot of tools like Revit architecture, Revit structure, Navis work. There are a lot of tools. There's a lot of things in this thing BIM, like 3D, 4D, 5D, 6D and all. And it's a good job also. If you're interested in those jobs, you can do BIM job also. See, future is there in all the field. Depends आपका इंटरेस्ट कितना है. डिपेंड्स आप अपने कंफर्ट जोन से आके कितना काम करना चाहते हो. अब कोई बोलेगा सर मैं 9 to 6 ही काम करूंगा, उसके ऊपर काम नहीं करूंगा, देन व्हाट आई कैन डू फॉर दैट. दैट इज हाउ इट इज. सो जॉब रहेगा, जॉब भी है, काम भी है, करना तो पड़ेगा. दैट्स हाउ इट इज. इजी लाइफ कुछ नहीं होता है, वो तो मैं आई ऑलवेज टेल इन माय वीडियो, इजी लाइफ कुछ होता नहीं है. सारे लोगों को काम करना है, ठीक है. एंड वो सिर्फ इजी लाइफ सिर्फ फिल्मों में होता है. रियल लाइफ इज ऑलवेज डिफिकल्ट. डिफिकल्ट मतलब काम करना पड़ेगा तभी तो पैसा मिलेगा ना. अब कोई बंदा बोलेगा मैं 9 9 बजे को जाऊंगा, 5 बजे का आऊंगा, मेरे को 1 लाख रुपए की सैलरी चाहिए. अरे तुम्हें 22 साल 23 साल की एज में कौन 1 लाख रुपए का सैलरी देगा बताओ. नो बडी विल पे ना. सिंपल, यू अपग्रेड योर नॉलेज, काम करो 2 3 साल. यू हैव टू वर्क, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, देन slowly you can plan your future. JP Jobs. I am really thankful to you, sir, as your videos motivated me a lot. Yeah, good, nice. So that's what we are trying to do. So ultimately, you have to take a decision. I am not the someone who will change your life, but I can mentor you because there are, see, जो अभी मैं आज कर रहा हूँ, especially my mentoring session. There is not even one channel who is doing such kind of jobs, right? So if we mentor you and if you get a right track, it's always a better opportunity for you people. अगर आपको नहीं लेना है, सिविल में नहीं रहना है, you can see, I'm no one to decide your future. You have to decide, but I can tell you what are the opportunities that we have. That's it. Yeah. Sir, which course I have to join to become a RCC consultant? See, Parth Patil, first I want to know your history, what you are doing, whether you are a diploma holder, you are a BTech holder. Right now, what you are doing, whether you are doing a job or not. Okay. So after understanding that only, I'll suggest my course. I'm not someone who will just sell my course to you because I have a course like on complete site execution. I have a course on planning and all. But if your intention is not to go there, I cannot help that. If you're a diploma holder, do one thing. ये मेरा WhatsApp का number दूंगा. Plus, see, WhatsApp and don't call me, okay? I'll reply on WhatsApp, and then if needed, I'll come on call and I'll speak to you people. +918095128110 से मेरा WhatsApp number रहेगा. आप मेरे को WhatsApp करिए आज. मे बी टुमारो आई एम फ्री, तो मैं आपको कल फोन पे या मैं आपको जूम पे समझा दूंगा क्या क्या करना है. ओके, बिकॉज आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज आरसीसी कंसल्टेंट. सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आरसीसी कंसल्टेंट. देन मेरे को समझ में आना चाहिए कि आपका फ्यूचर का गोल क्या है, आपको क्या करना है. बेस्ड ऑन दैट मैं आपको कोर्स को सजेस्ट करूंगा. ठीक है, डन. और कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी को? दैट्स इट. Yes, Bhaiji, 2017 engineering graduate with zero experience. No problem. I was preparing for civil service exam. Very good. Can I get a job in civil? Yes, yes, you can get job anything. Only the thing is, first identify which field you want. अगर आप 2017 के हो, तो आपका एज अभी 28 या 29 होगा. So at the age of 28, 29, I will not suggest your side job से. No, आपसे होगा भी नहीं क्योंकि आप लगभग 17 से 24 7 साल आप घर में बैठ के पढ़ाई किया होगा. साइट में जाओगे, डेफिनेटली नॉट सस्टेन देयर. आई वुड सजेस्ट यू सम ऑफिस जॉब्स. आप इंटीरियर फिट आउट्स में चले जाइए. एंड आपको अगर बीआईएम फील्ड में जाए तो आप बीआईएम फील्ड में भी चले जाइए. ओनली द थिंग इज आपको कुछ ट्रेनिंग्स लेने पड़ेंगे, थोड़ा पैसा खर्च, क्योंकि ट्रेनिंग्स फ्री का कोई कराता नहीं है. अगर बीम का ट्रेनिंग करना है तो मिनिमम 30 40 थाउजेंड रुपीज पैसा लगेगा. 6 महीने का टाइम लगेगा, तब जाके आप सीखोगे. एंड आप एटलीस्ट एक लेट से 20 25 हजार 30 हजार की नौकरी पे आप जा सकते हो. ठीक है, आप कर सकते हो. तो अरविंद जो है, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है, आप मेरे को कल कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए. आई विल टेल यू व्हाट हैज टू बी डन. ठीक है, दिस आर द ऑप्शंस वी हैव. तो आप कर सकते हो ये सारी चीज. ठीक है. से आई विल टेल यू वन रियलिटी. तो आपने 2000 आप 2017 के पास आउट है ना, मैं आपको एक रिव्यूज दिखा दूंगा. ये मेरा स्टूडेंट है. ठीक है, एक मिनट.
यार जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, सो दैट विल हेल्प मी। ओके, अभी यहाँ पे देखो यार, मैं एक चीज बताऊंगा, ये मेरे स्टूडेंट है। ओके, इसने देखो 2020 में इसने बीटेक किया था, एंड 4 साल इसने कोई जॉब नहीं किया। इसका कुछ खुद का एक फुटबॉल एकेडमी था, इज अ गुड फुटबॉल प्लेयर, तो फुटबॉल का देख रहा था। अभी उसको बिल्डर बनना था, तो उसने मेरा कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी उसने कोर्स लिया, अच्छे से पढ़ाई किया, रहेजा कंपनी में गया था इंटरव्यू के लिए। सर आई गॉट सिलेक्टेड, only I got selected out of 6 candidates. तो इसको सिलेक्शन, and they were ready to pay him 20, of course 20,000 is not a big salary, but for someone who is having a 4 years of gap, who learned the things, Raheja is a very good company in Mumbai. 20,000 की सैलरी पे भी काम करो, इट्स ओके यार, 1-2 साल करोगे, अच्छे नॉलेज गेन करोगे, देन अप्लाई फॉर अ बेटर कंपनी एंड ऑल। ओके फाइन, दैट इज हाउ इट इज। तो देखो इसको 20K का सैलरी मिला था। इट्स नॉट दैट मेरे वजह से मिला, मेरे वजह से 30% आई हेल्प हिम, रिमेनिंग 30-40% उसका एफर्ट भी है, उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, एंड उसका नसीब भी अच्छा था, ही गॉट अ जॉब। सो ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी याद रखना, आपका जो गैप है वो सब मैटर नहीं करेगा। ओके, वो मैटर नहीं करेगा, इट्स ऑल अबाउट द नॉलेज एंड द स्किल्स दैट यू, अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, स्किल्स है, कंपनी वांट्स दैट, दैट्स इट। ये जो गैप एंड ऑल, ये जो मार्क्स एंड ऑल, जब आपका ऑन कैंपस होता है तब वो मैटर करेगा, क्योंकि अगर आप L&T, टाटा कंपनी एंड ऑल अगर कॉलेज में आते, दे से कि हमको 8 CG पे ऊपर वाला ही बंदा चाहिए, बिकॉज दे हैव टू फिल्टर आउट द पीपल इन ऑन कैंपस। ऑफ कैंपस में भी कुछ कंपनीज दे टेल कि हमें 8 CGPA वाला बंदा चाहिए, बट अदर देन दैट, इफ यू हैव अ राइट स्किल्स, if you have people, if you have good people, if you have right skills, definitely you can go to a better company and all. It's all about आप कितना effort देना चाहते हो, it depends on that. So there is nothing, there is no ऐसा कुछ नहीं है कि इंजीनियरिंग के बाद ही आपको जॉब लेना है, ऐसा कुछ नहीं। यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ। ओके, दैट्स इट। सो यू शुड बी वेरी हैप्पी दैट यू प्रिपेयर्ड फॉर सिविल सर्विस एग्जाम। डेफिनेटली योर नॉलेज इन पॉलिटिक्स, योर नॉलेज इन जियोग्राफी शुड बी वेरी गुड। ठीक है, दैट इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। एंड इसके बाद यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस फ्रॉम योर प्रीवियस गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन, now you enter into a civil field। civil नहीं चाहिए, then you can go for other field। any other in Dehradun and all, I don't have any courses, my courses are online, आप ले लो, नहीं तो ऑफलाइन ट्रेनिंग मैं आपको बैंगलोर में बताऊंगा। You can come to Bangalore and do offline training, so you connect me on the number 8095128107। मेरा ये वाला व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को कल कॉल करिए, I'll guide you। okay, yeah, but you'll not get a salary of 50-60,000 and all। I can expect, you can expect a salary of 20-25 हजार तक, we can think of। okay, again depends आपका इंग्लिश कैसे है, आप how do you speak with the people, that also matter, because sometimes salary depends on how you perform in the interview, depends on how you speak also ना। आप आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज, अगर आप बात ही नहीं कर पाओगे तो we cannot do anything for that। वो तो आप ही को ट्रेन करना, इट्स योर लाइफ। सर कल्पतारू कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में, अरे आई डोंट हैव कल्पतारू, आई थिंक वन ऑफ माय स्टूडेंट इज वर्किंग इन कल्पतारू। आई थिंक एक मिनट, यूट्यूब चैलेंज वो डिलीट कर दिया होगा, अब तो नहीं है मेरे पास। देयर इज वन रिव्यू, एक रिव्यू था, अभी तो नहीं है मेरे पास। देयर इज वन ओल्ड रिव्यू where one of my student was working in a Kalpataru company। It's a good company. Yeah, I mean, see, you apply. Once you enter that company, you'll get to know whether the company is good or not. If it's good, continue. If it's bad, leave the company, apply for the other company. Because I cannot tell you everything. No, I mean, वो आपको अगर उतना ही देखना है तो एक there is one ये वाला, what is that website by name ग्लास डोर। तो वहां पे जाके आप बच्चों का रिव्यूज देख लीजिए, उस रिव्यूज से आपको पता चलेगा हाउ इज दैट कंपनी एंड ऑल। ओके, so I think there was one student who messaged me that sir I'm working in Kalpataru। okay, I think it's not available, पता नहीं कहाँ पे। ठीक है, there was one review, let me check once, if not no problem। ओके, नहीं मिल रहा यार, पता नहीं कहाँ पे गया। ओके, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। Okay, it's not there, no problem, leave it। okay, you can apply, say okay, there's one website by name glassdoor glassdoor uh, reviews। you can go to that website, not website, you just write Kalpataru reviews, you write Kalpataru taru okay, write Kalpataru glassdoor reviews, you'll get to see the reviews of the people those are given, from that you can get an idea what kind of company it is। okay, sir, how to obtain government job after diploma or junior engineer? What is this? How to obtain government job
after diploma or junior after diploma for junior engineer. You have to prepare for the government job, you'll get a job, simple. But government job, there is no guarantee whether you will get selected or not, but it all depends on your luck also, your effort also. You should give at least 1 to 2 years of your time. अच्छे से पढ़ाई करो. Maybe you can take some coachings also, but there is no guarantee in that. So you have to try your best. Sir, when you have what is that, sir, when you have to new content, again I told you, like now though it's like 1 2 projects is going to happen in next 10 days. If it starts, then that center line marking, from there only I'll capture the video, and from there I'll start to make a video. So once I start to make a video, at least I require 2 months. There's so much of things I need to add. And if I do this live sessions, career mentoring, I'll not get time. I used to get time before, but अभी क्या हो रहा है, डेली 10 10 स्टूडेंट्स का मैसेज आता है, तो उनका मेंटरिंग सेशन करना, तो कभी कभी लाइव आना, तो सो इट विल टेक सम टाइम. सो जस्ट वेट करना पड़े, मैं ऐड कर दूंगा, डोंट वरी. ठीक है, पर नहीं, मैं डेट नहीं बताऊंगा. अगर बताएंगे उस डेट के बाद फिर आप मैसेज करोगे, सर आपने बताया था, तो आई विल नॉट रिवील एनी डेट. जैसे जैसे मैं फ्री हो जाऊंगा, आई ऐड इट. थैंक यू सर. इज देयर एनी ऑफलाइन ट्रेनिंग, वो बता दिया. ओके. Sir, I have 3 and 4 year experience in freelancing work in residential building planning and 3D model make. Can I show this? Yeah. See, I'll tell you one thing. BK Sarkar, if you have this 3 to 4 year of experience in freelancing work in residential, try for BIM jobs. Because in BIM jobs, you can at least have a better career. Because since you're already doing this 2D का plan, 3D का model आप बना रहे हो, आप BIM में भी यही सारी चीज करोगे. उसमें costing भी आता है, फिर उसमें 4D 5D सब कुछ आता है. You will have a good coordination with the other people. अगर आपका communication skill अच्छा है and all, आप थोड़ा BIM के you go for a BIM, take a BIM training. So that will make you a better person, because BIM में अगर आप जाओगे ना, will have a weightage compared to a fresher, because already आपके पास वो 2D 3D बनाने का आइडिया है, आपको नॉलेज है एंड ऑल. तो आप BIM का ट्रेनिंग ले लो. एक 6 महीने का ट्रेनिंग होता है, 30 40 हज़ार रुपए का फीस रहेगा. डू इट एंड फिर जिम BIM के जॉब्स में अप्लाई करिए. दैट इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू. ठीक है. Where is the offline training center you mentioned? Bangalore. Yeah, one you can think of. I'll not tell online. You message me individually, because before telling I should know what is a requirement, because again what will happen if I tell tomorrow, if it goes wrong, then I'll be responsible for that. So on YouTube and all, I will not tell. First I'll understand what is your requirement. Based on a requirement, I'll suggest your training, and I'll suggest you मेरा course भी suggest करूंगा. Say training I suggest only for placement point of view. If you really want to gain a good knowledge, my courses are far sufficient to get a side job and all. Okay. ट्रेनिंग आई सजेस्ट यू ओनली फ्रॉम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आई कैनॉट हेल्प यू मोर इन द प्लेसमेंट एंड मेरे पास इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है. ठीक है. सो आई विल नॉट रिवील एनी नेम ऑफ एनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एंड ऑल. फिर होता है, मान लो आपने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया एंड आपको वहाँ से सेटिस्फाई नहीं होगा, देन यू शुड नॉट ब्लेम मी. एंड ऑल्सो 30 40 हज़ार की फीस होती है, तो 30 40 हज़ार इज नॉट अ बिग अमाउंट. सो आई विल नॉट टेक रिस्क विथ ऑल दीज थिंग्स. यू मैसेज मी इंडिविजुअली बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट. आपको क्या करना है, कहाँ पे जाना है, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा. मेरे कोर्स भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बिकॉज आफ्टर टेकिंग माय कोर्स you go to those training institutes, because मेरे courses में I teach you lot of things practically from the side, where other training institutes will not be in a position to do that. So you should go simultaneously. So I'll not reveal the name on online. Your WhatsApp number is already given. Based on your requirement, I'll suggest you. That's it. Ha. My UK PSC mains exam got postponed, so I need a backup job. That's why I asked. Thank you, sir. I will contact you in WhatsApp. Thank you for the. Okay, sir. How to obtain job in Lodha company after diploma? Lodha company after diploma, you should first you should have skills here. Applying in Lodha company and all, you should have site execution का knowledge, estimation, drawing का knowledge, MS Excel use करना आना चाहिए, basic project planning का knowledge सब होना चाहिए आपके पास. That's the first thing. इतना knowledge होने के बाद, then you go to a Lodha website. There will be current vacancies, उसमें apply करिए. नहीं तो try to connect with the people those are working in Lodha and all. So it requires lot of efforts. ये सब एक दिन दो दिन का खेल नहीं है. 2 3 महीने तक आप करते रहोगे, opportunities will open up. That is how you're supposed to do and all. First you before going to Lodha company, have some knowledge about site execution, estimation, drawing, reading, basic project planning and all. Uske baad you should apply. If you don't have all this knowledge, they'll not even entertain also. And in Lodha company and all, they usually entertain 2+ years of experience, 3+ years of experience. That's how it is. So it's not possible. It's not easy, but it's not impossible. You can do anything in this world, provided you have that fire in the belly, provided you connect with the right people. हो सकता है. ठीक है. डन. ठीक है. और कुछ क्वेश्चंस पूछना है? यू पीपल हैव एनी अदर क्वेश्चंस टू आस्क?
या या यू कैन डू दैट। कल्पतरु ग्लासडोर रिव्यूज आप सर्च करिए, उससे आपको कंपनी का बारे में पता चलेगा, रिव्यूज पता चलेगा लोगों का, एंड देन यू कैन अप्लाई। या सी, जब आपको कोई कंपनी मिलेगा, जस्ट अप्लाई फॉर दैट कंपनी, काम करिए 2-3 महीने, फिर आपको पता चलेगा। डोंट डिपेंड ऑन समबडीज रिव्यूज। उसका रिव्यू और आपका रिव्यू मैच नहीं कर पाएगा, उसका थिंकिंग आपका थिंकिंग मैच नहीं कर पाएगा। यू कैनॉट सिंपली डिपेंड ऑन समबडीज रिव्यूज ना। तो आप काम करिए, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो आप काम करिए। 2-3 महीने के बाद आपको पूरा एबीसीडी पता चलेगा उस कंपनी के बारे में ना, देन यू टेक अ कॉल वेदर यू वांट टू कंटिन्यू। आप कंटिन्यू करिए, नहीं करना है तो दूसरे कंपनी में अप्लाई करिए। ओके, देयर इज वन गुड पोस्ट, यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन योर स्किल्स। अगर आपके पास स्किल्स है ना, तो डेफिनेटली यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर जॉब। अगर एक कंपनी से निकाल देंगे, दूसरे 3-4 कंपनी आपको मिल जाएंगे। तो अपने स्किल्स के ऊपर काम करिए। यू यू शुड थिंक दैट मेरे पास उतना तो नॉलेज है, अगर यहाँ से निकाल देंगे मैं दूसरी कंपनी में जा सकता हूँ। So if you think in that direction, you don't have to worry about your this jobs and all. ठीक है, that's how it is. या और कुछ क्वेश्चन पूछना है? ओके, so there is no questions again, no problem. यार जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, that will help me. ओके, ठीक है, no more questions. Hmm. Okay, if there is no more questions, I'll show you about my course once. You can check out the course content. So वन थिंग इज, आप लोग क्या करना, मेरा सिविल ब्रेंस का ऐप डाउनलोड करिए, और ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिसंबर 15 से या दिसंबर 10 से हम अपने सारे कोर्सेज के ऊपर ऑफर चलाएंगे। जैसे दिस वाज लास्ट ऑफर इन दिस पर्टिकुलर ईयर, एंड इसके बाद फिर ऑफर नहीं रहेगा, और कोर्स का प्राइस भी हम बढ़ा देंगे। इस कोर्स के ऊपर आपको लगभग, ये जो इंडिविजुअल कोर्सेज है इसके ऊपर आपको लगभग 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। इंस्टेड ऑफ 1500 यू कैन बाई दिस फॉर अराउंड 1000 रुपीज, एंड ये 8000 वाला कोर्स आपको लगभग 7000 में मिल जाएगा। एंड बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आई विल शो यू व्हाट इज कवर्ड इन द कोर्स एंड ऑल। अगर आप एक फ्रेशर हो, अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऑफ इन इंजीनियरिंग में हो, इफ यू आर अ फ्रेशर, इफ यू हैव एटलीस्ट 1 year of experience, definitely I welcome you. Enroll in this course. It will be one of the best course that you'll ever take in your life. And we have covered a lot of things up. Before taking the course, I'll tell you the reviews. You can check out the reviews given by the students and all. So that will help you to understand to what level you're going to learn. And enroll in the course is always a better option, so that आपको अच्छा level का knowledge भी मिलेगा। इस तरह आप reviews देख लीजिए, people those are given the reviews and all. I'm already currently working in a construction field. By I attended your course, Site Engineer Mastery. After that, gain all deep knowledge of construction. So I'm interested in your construction manager course. Okay, great work by Akshay sir and Civil Brains team. Okay, value for money, excellent app. Your method of teaching is very good. It is helpful for fresher and experienced people. He is having roughly 6 years of experience. He's working on IRS building in Mumbai. Thank you very much for giving this type of content. Keep helping everyone. Okay, good explanations. Uske baad you can see here. Okay, thank you, sir. All your courses are excellent. He explains everything so well. So whatever best knowledge I have, I've explained you a lot of things. These are my students who are working in, Saudi. He got a job abroad in my first interview. He is in Saudi Arabia now. Okay, 100% will do it, sir. Bought a lot of courses from you. I will leave ratings after completing each course. This course is very helpful if you're a fresher with an experience. I learned a lot of things. I didn't get this type of knowledge in my 4 years of engineering. Which money you spent on this course is worth. Okay. He was able to do a centerline marking on the site with the help of my course. You can see I wanted to thank you for your valuable lectures and videos, which have been really helpful to me in my civil area. I gained more knowledge from you than my college because of the way you instruct us, an amazing way your personal assist us. You can't find this kind of teaching anywhere. A much needed course as a civil engineer, which I felt so far. This is the best course of my life. I got my each and every doubts cleared, Akshay Kamath sir. You can see our site engineers from the contractor side need this course. I suggested them. After attending your 6-month construction manager master course, even the layman will become a professional civil engineer. Okay. So he's one of my students who's working in Dubai. There are students working in Oman. He was a student who got a job opportunity in Dubai also. So he was a student who had enrolled in my course, got a job in Dubai. I have 7 years of experience in this construction field. I have seen so many people, but there are rarely some people who give genuine advisors. You are one of them. He had enrolled in my 6-in-1 combo course. Yeah, again it's the same review again.
एंड सर मैंने बहुत से कोर्सेस लिया है बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है एंड ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड रियल प्रोजेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी जबरदस्त. थैंक यू सर, मेड दिस टाइप ऑफ कंटेंट फॉर अस. Excellent clarity from the instructor. Till now, it's been a good learning experience. The course is amazing. It's very practical applications. Exceptional course. Thank you to the tutor. I'm a site engineer. This course helped me immensely. I'm grateful to the teacher to put this much effort for us. Everything is covered in this lecture for a site engineer. Is one of my student is working in LNT. Again, LNT में भी आपको 12 घंटे का जॉब रहेगा, कभी भी याद रखना. देखो, इसने 2022 में रिव्यू दिया था, तभी ये 12 घंटे का. देखो, होता ही ना, आपको आपका आपको बोला आपको एलएनटी में काम करना है. अगर कोई बोलेगा 12 घंटे काम करना है तो आपसे नहीं हो पाएगा. इट्स नॉट पॉसिबल. सो एट द एज ऑफ 22, 23, 24, 25 अगर आपको मिल रहा है तो आप सीख लीजिए. वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, साइट में तो ऐसा ही होता है. धीरे धीरे आप चाहे तो बाकी दूसरे फील्ड में चले जाइए, प्लानिंग, क्यूएस एंड ऑल. दैट विल बी ऑफिस जॉब एंड ऑल. पर आप जितना रगड़ोगे ना स्टार्टिंग में, विल हैव अ बेटर फ्यूचर ऑल्सो. ओके, दैट इज हाउ इट इज. एंड इसके बाद you can see here it suggested 50 plus people. Okay, these are students from Bangladesh and all. And this course helped me for securing my job as a site engineer, as most of the technical questions were from the content. I would recommend more than 50 plus people who are enrolled in your courses and they're really satisfied. Okay, so he is a project manager. I would like to tell you that I subscribed to your one course, which I find very interesting and knowledgeable. The way you teach is really superb. I come from a non-civil background, so I was exploring other courses too. I'm watching your lectures like a Netflix series. These are the students who are given. I was a frustrated civil engineer earlier when I don't know about your course. Fortunately, while researching, I got to know. Sir, I gave interview on Saturday. Today, I got selected in the site engineer job. Thank you, sir. Okay, so you can see all the reviews given by my students. Okay, so when you say now somebody will tell you why should I enroll in the course? I can learn from YouTube. You cannot learn everything from YouTube. From which channel you will learn? Who will give you everything on YouTube? I'll challenge you one thing. I'll give you an open challenge. This is my course on steel structure and PV construction. It's a 22 plus hours of the content. I'll challenge you. Find me the same content on YouTube. If you find the same content, I'll give you 1 lakh rupees. Take 1 lakh rupees from me. I'm saying it on this thing. I mean YouTube. You can record my video also. I don't have problem. This entire course is a 22 hours of the content. Now somebody will tell, so why should I take your course? I learn from YouTube. Okay, then no problem. You learn from YouTube. Tell me a channel who is going to teach you the 22 hours of complete PB construction. He should cover all these things. If somebody is covering all these things on YouTube and giving it for free, I'll give you 1 lakh rupees. Enjoy it. I have 1 lakh rupees. Don't worry. No, don't tell कि आपके पास I have 1 lakh rupees. I'll give you. But you cannot do that. I know, no. Since we are there from the past 6 साल से हम पढ़ा रहे हैं. हमने पूरे चैनल्स को देखा है. राइट, ऐसे नहीं बनते वीडियोस. तो आप देखो पीबी का ड्राइंग रीडिंग का है. हाउ टू रीड द सॉइल रिपोर्ट का रिपोर्ट है. मटेरियल एस्टिमेट इन एक्सेल शीट से. पीबी का वेयर हाउस ड्राइंग रीडिंग. सो दिस आर द थिंग्स वी आर कवरिंग इन अवर लेक्चर्स एंड ऑल. डेफिनेटली यार, अगर तुम फ्रेशर हो, 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली एनरोल इन द कोर्स. आपको अच्छा नॉलेज मिल जाएगा. विद दिस नॉलेज आप अच्छे कंपनी में अप्लाई करिए. देयर आर अपॉर्चुनिटीज. पर अगर आपको पैसा भी खर्च नहीं करना है तो यूट्यूब के भरोसे में मत बेटी. मैं अभी भी बता रहा हूँ. इवन इन माय चैनल ऑल्सो आई हैव 200 प्लस वीडियोस ऑन माय कोर्सेज. चैनल में मैं सिर्फ 500 वीडियो यूट्यूब में, बाकी 1500 वीडियो तो मेरे कोर्स के अंदर ही है. वो कभी यूट्यूब पे नहीं आने वाले हैं. ऑलवेज रिमेंबर दैट. तो ये सारी चीज हमने कवर किया. पीबी क्या है, उसका फंडामेंटल क्या है, इसका साइट एग्जीक्यूशन कैसे होगा, इसमें साइट वीडियोस भी ऐड करेंगे. लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव डन एंड ऑल. तो ये वाला कोर्स आपको कभी ऑनलाइन में मिलेगा नहीं. नो, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु टेल आपका कोर्स क्यों लेना है, हम फ्री में सीख लेंगे. इम्पॉसिबल. मैं बता रहा हूँ ना, इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू लर्न ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम यूट्यूब एंड ऑल. अगर आप खुद से सीखने जाओगे आपको 2-3 साल लग जाएंगे. कॉन्सेप्ट सीखने के लिए 2-3 साल लग. साइट तो सीख लोगे पर कॉन्सेप्ट भी सीखना पड़ेगा ना. सो आपको 1,000 अभी 1500 ऑफर में आपको 1000 के आसपास मिल जाएगा. सो यू गेट अ वंडरफुल नॉलेज. सीख लीजिए, अच्छे अच्छे कंपनीज में मिल जाएंगे. अप्लाई करिए. दैट इज हाउ यू आर सपोज टू ग्रो इन योर लाइफ. ठीक है. या okay, there are few questions. You can check out all the content and all. ठीक है. I'll take a few questions from the students those have put. ये सारे कोर्स का कंटेंट है. I'll go back to the this thing. हाँ, ठीक है. Sir, is there scope after masters in environment engineering? See, there is a scope. There is a scope. You should apply for the right companies because again, environmental engineering is also a good field. Especially abroad and all, there is a good scope for environmental engineers because India में इतना नहीं है. बाहर countries में they require environmental engineers and all. India में भी है, but you should connect with the right people. जो उस फील्ड में, हाँ, environment engineer. I tell you, my one of my friend.
जो मेरे साथ एमटेक किया था, मैंने एमटेक स्ट्रक्चर्स में किया था, उसने एनवायरमेंटल में किया था। एंड उसके बाद वही जो राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल, आरसीएफ कंपनी में उसको जॉब मिला है। इज अर्निंग प्रीटी गुड। जितना मेरा इंटेंशन है ना, अब तो उसको 2018 से अभी 2024 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया। एटलीस्ट आई वुड से एटलीस्ट 15 लाख का तो सैलरी, एटलीस्ट 1 लाख रुपए पर मंथ तो कमा रहे। इट्स ऑफिस जॉब। एंड अभी देखो दिल्ली में सब बहुत पॉल्यूशन चल रहे हैं एंड ऑल, so environmental people have good scope also, but only the thing is you should connect with the right people. You should apply for the good companies, and you should have good knowledge also. Okay, but I don't have knowledge in the environmental field. If you want, I can share his contact to you. You can speak to him. That is what I can do from my side. Okay. Kush Tripathi. Okay. सर, मुझे मैनेजमेंट प्लानिंग में जाना है, तो बीटेक के बाद डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का कोर्स करना ठीक रहेगा या फिर एमटेक करके कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट? सर मुझे मैनेजमेंट प्लानिंग, सी यार मैनेजमेंट प्लानिंग में जाना है तो कुछ बीटेक के बाद डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, यार कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के कोर्सेज आप करने से यू डोंट बिकम अ प्लानिंग इंजीनियर एंड ऑल। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट साइट पे एटलीस्ट 1 साल काम करिए। साइट पे काम करने के बाद यू गेट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि फुटिंग के बाद क्या होगा, प्लानिंग, आई मीन फुटिंग के बाद कॉलम, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस, ब्रिकवर्क, ब्लॉक और प्लास्टरिंग, पेंटिंग सब होगा। कितना दिन लेगा, कितने मैन पावर चाहिए, क्या रिसोर्स चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, ये सारी चीज आप साइट पे 1 साल सीखोगे। अच्छे साइट पे करो, छोटे मोटे G+1 G+2 बिल्डिंग में नहीं करना है, हाई राइज बिल्डिंग्स पे करना है आपको। 1 साल करने के बाद उस 1 साल के साथ साथ यू एनरोल इन द कोर्सेज लाइक एमएस एक्सेल अच्छे से सीख लीजिए, फिर एमएस प्रोजेक्ट सीख लीजिए, प्राइमवेरा सीख लीजिए, पावर बीआई बाद में सीख लीजिए। दैट्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक पूरा कॉन्सेप्ट उसको सीख लीजिए, काफी है। देन अप्लाई फॉर द प्लानिंग इंजीनियर का जॉब, दैट इज वन ऑप्शन। नहीं तो एमटेक आप कर सकते हो, पर एमटेक में देखो अगर आप निकमार से करोगे तो आपको लगभग 13 से 14 लाख रुपए चाहिए। अगर आपके पास पैसा है देन इट्स वर्थ। अगर आप लोन लेके कर रहे हो 13-14 लाख, मतलब एटलीस्ट अगर आपने 12-13 लाख का भी लोन लिया, एंड उस लोन भरने में भी बहुत टाइम लग जाएगा आपको। एंड मास्टर्स करने के, एमटेक निकमार से करने के बाद ऑन एवरेज जो पैकेज है 6.5 लाख का पैकेज है, जो रफली 50,000 का मिलता है। कुछ लोगों को 35-40,000 का भी सैलरी मिलता है। अगर इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली वेर योर पेरेंट्स कैन अफोर्ड 12 से 13 लाख रुपीज, एंड देन ओके बेटा तुम कर लो, लोन हम भरेंगे, यू डू इट फ्रॉम निकमार एंड ऑल, इट्स वर्थ डूइंग। इवन IITs ऑल्सो यू कैन थिंक ऑफ, बट अगेन IIT में जाना इतना ईजी नहीं है। आपका रैंक्स भी अच्छी, यू शुड ब्रिंग अ वेरी गुड रैंक इन IITs, कर सकते हो। पर अगेन आई टेल यू वन थिंग, नॉलेज विल इम्प्रूव ओनली व्हेन यू वर्क ऑन द साइड, एंड कुछ कोर्सेस में एनरोल करके आपका नॉलेज बढ़ने वाले। colleges will not teach you those kind of things, how to do a planning and all, concepts they are going to teach you, but again you have to enroll in the course also, that is how you are supposed to do. So कावेश बामेल, आप मेरा मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है, +91 व्हाट्सएप करिए। I can speak to you tomorrow, and based on my experience I'll tell you what has to be done, then you can take a decision. I would always suggest try to work as a site engineer for 1 year, because that is the basics for a planning engineer. आप प्लानिंग का मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर सब ऐसे नहीं बनते जब तक आपको साइट का चीजें पता नहीं क्या प्रोजेक्ट मैनेजर, और प्रोजेक्ट मैनेजर सब कोर्सेज से नहीं बना जाता है। इट हैज टू कम थ्रू एक्सपीरियंस ओनली। ओके, दैट्स कोर्सेज, मतलब स्पेशली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स लेके आप प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बनोगे। ओके, दैट्स हाउ इट इज। Sir, how to contact you? I've given my number +91 8095 12816. This is my WhatsApp number. Don't call me, WhatsApp me, and whenever I am free, I'll reply it. Okay. Bye. Okay. So, Kush Tripathi, I answered your question. Kavish Bamil, I've answered your question. And sir, I need your help. Can I call you after the session? After the session, it's already 8:39. Already 9 o'clock हो जाएगा. मेरे पास और एनर्जी नहीं है. मॉर्निंग से मैंने 4-5 लोगों का सेशन लिया है. You call me tomorrow, यार. Again, I'll not speak tomorrow. मैं कल आपसे बात करूँगा. You call me tomorrow, okay? But before calling, just WhatsApp me, because if I'm on work and all, I'll not pick your call and all. WhatsApp me. I'll give you a time, and then you can speak to me. Sir, which course is best? You call me tomorrow. Based on your requirement, I'll tell you. I cannot simply tell you to take a course. I should know what is your requirement. Based on that, I'll suggest your course. Yeah. Thank you, sir. Sir, I have a career gap, 6 years. Now I recently joined RMC and I have 1 year experience as QC. I applied to 2 to 3 companies and have an interview as well as site engineer, but didn't get any update. Now that's wait for them. Just wait for those people. We'll see. Okay. And what salary you're getting in RMC? See, RMC has a good this thing, what is that, स्कोप भी है। आप उसी में आरएमसी के साथ साथ अगर आप सेल्स एंड ऑल उसमें जाओगे, उसमें अच्छा पैसा भी आप कमा सकते हो, बट यू शुड लव दोस फील्ड एंड ऑल, सेल्स फील्ड एंड ऑल। उसमें प्रेशर भी होता है, प्रेशर तो सारे फील्ड में होता है, तो आप सेल्स वाले फील्ड में सब जा सकते हो। बट एनी हाउ, यू ऑल्सो कैन कनेक्ट टू मी यार, कल आप मेरे को व्हाट्सएप करिए,
whatever knowledge I have, I can guide you. ठीक है, fine. So another 10 minutes will take, then we'll wind up. और कुछ questions अगर आप लोगों को पूछना है, Rahman, Saifur Rahman, you can WhatsApp me tomorrow. Based on your requirement, I'll suggest your course. Okay. चलो. But why did you apply for a site engineer job if you're working in the RMC and all? और RMC में आपको कितना सैलरी मिल रहा है? 22K per month. Okay. You call me tomorrow. We'll decide what has to be done. Okay. अगर साइट में आपको इसके ज़्यादा मिल रहे तो आप जाओ, नहीं तो आरएमसी में कंटिन्यू करिए. आरएमसी में थोड़ा सेल्स एंड ऑल, उसमें आपको अच्छा जॉब मिल जाता है. सेल्स मतलब टेक्निकल से इज वन थिंग कॉल्ड एज टेक्नो कमर्शियल. टेक्निकल भी नॉलेज होना चाहिए आपको और कमर्शियल का भी नॉलेज होना चाहिए. सेल्स एंड ऑल आप इसके साथ भी कर सकते हो. आप उसमें आरएमसी में भी आजकल सारे लोग आरएमसी यूज करते हैं. यू कैन डू दैट ऑल्सो. बट एनी हाउ, यू कनेक्ट टू मी टुमारो, विल सी व्हाट हैज टू बी डन. ठीक है, ओके. Any other questions you people have? There are 8 people online. ठीक है, okay. No more questions. Fine. We'll continue with the thing what I was showing in the course. आप देख लीजिए, आप सिविल ब्रेंच का ऐप डाउनलोड करिए and there will be offer from December 10 to 15 onwards. Try to check that and then you can decide which course you want to buy. Okay. So this construction manager master में we'll try to cover a complete site executions and all. Starting से end तक it's a good course और इसमें हम अपडेट करेंगे. Okay. एंड इसके साथ आपको इसमें एस्टिमेशन भी मिलेगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन रहेगा, बेसिक प्रोजेक्ट. ये जो पीबी का मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, पीबी इज ऑल्सो कवर्ड. सो पीबी इज ऑल्सो कवर्ड हियर. इट्स अ वेरी गुड कोर्स. आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो. देयर विल बी ऑफर ऑन दिस. यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स. अगर आपको ये वाला नहीं चाहिए, यू कैन इवन एनरोल फॉर 6 in 1 कॉम्बो कोर्स. पर इसमें आपको मेरे फ्यूचर के कोई कोर्सेस नहीं मिलेंगे, जो भी है इतना ही रहेगा. बट इट्स अ गुड कोर्स जहाँ पे इसमें भी आपको साइट एग्जीक्यूशन मिलेगा, एस्टिमेशन मिलेगा, ड्राइंग रीडिंग मिलेगा, फिर क्वांटिटी एस्टिमेशन, बीबीएस बीओक्यू मिलेगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन, कॉन्ट्रैक्ट, एमएस एक्सेल भी मिलेगा. इट्स अ वेरी गुड कोर्स. ये कोर्स भी अच्छा है, पर इसमें आपको मेरे प्री इंजीनियर बिल्डिंग, एमएस प्रोजेक्ट, बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग ये सब नहीं मिलेगा और फ्यूचर के कोर्सेस नहीं मिलेंगे. फ्यूचर इफ यू वांट यू कैन अपग्रेड. ऐसा नहीं कि एक ही साथ सब कुछ लेना है. बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन अपग्रेड आल्सो लेटर. ओके, दैट्स हाउ इट इज. इट्स अ वेरी गुड कोर्स. ये कोर्स भी अच्छा है, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं. देयर आर गुड, वेरी वेरी गुड. आई मीन ये कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर में ऑलमोस्ट 274 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड. एंड ये जितने भी आप रिव्यूज यहाँ पे आप देखते हैं, ऑल दिस आर रिव्यूज गिवन फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पीपल. द रिव्यूज आर फ्रॉम दोस कोर्सेज ओनली एंड फ्यू आर फ्रॉम इंडिविजुअल कोर्सेज एंड ऑल. ओके, दैट्स हाउ इट इज. तो बट दैट्स हाउ इट इज. आपको आप ले लो, अपने नॉलेज को अपग्रेड करिए. बाकी इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू टेक और नॉट. इट्स अप टू यू. ठीक है, या. एंड और क्या चाहिए? दैट्स इट, आई थिंक इनफ. और कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी. else we can finish it off. I'll take another 5 minutes. कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो. ठीक है, एंड मैंने नंबर भी दिया है एंड दैट्स हाउ इट इज. So I'll tell you one beautiful thing. Yeah, of course सारे लोगों को नहीं होता, फिर भी I'll give you an example. See, ये एक कॉलेज है, ओके, केपीआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तमिलनाडु में एक कॉलेज है. दिस आर द फ्रेशर स्टूडेंट. 2025 में इनका प्लेसमेंट हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. यू सी व्हाट सैलरी दे गॉट जॉब इन जापान. ओके, 21 लाख रुपीज का सैलरी, मतलब महीने का 1.5 लाख के आसपास. इंडियन सैलरी 1.5 लाख रुपए हो गया महीने का. ही इज वन ऑफ माई स्टूडेंट जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस था. ही गॉट अ 42,000 रुपीज का सैलरी. ओके, तो दैट इज. अब एक और स्टूडेंट है जिसने 18 के सैलरी से स्टार्ट किया था अपने करियर को. 1.5 ईयर एक्सपीरियंस हो गया. इज गेटिंग 45,000 रुपीज का सैलरी प्लस एकोमोडेशन प्लस फूड उसको मिल रहा है. इज वन ऑफ माई स्टूडेंट. ही गॉट कॉलेज प्लेसमेंट जब उसने जामिया मिलिया से या कुछ किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कुछ किया था. कैंपस प्लेसमेंट में उसको 40,000 का सैलरी मिला था. अभी उसको 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस है. नाउ इज गेटिंग अ सैलरी ऑफ 75,000 रुपीज. एंड वो एक ईएमएस एक कंपनी, ईएमएस, ओके, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एंड उसमें उस कंपनी का वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट जो उसने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. वन स्टूडेंट आस्क्ड मी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. So these are the people those who look for environmental engineers and all. EMS is a company. You can think of. Again, see, everybody will not get a package. It all depends here. Okay. You see here, they are looking for a resident engineer, civil. Rights is a company.
but they want a minimum 12 year of experience. They are ready to pay 3 lakh rupees per annum. I mean, yeah, 3 lakh rupees per month. Okay, so yeah, there are opportunities and all, but you should connect with the right people and all. But it's not a easy life. It's not a easy life. ऐसा easy कुछ नहीं होता, तुरंत तुरंत कुछ नहीं होता. It will take efforts, it will take long time and all. That's how it is. But it all depends on आपको करना क्या life में. You want to work in a companies, you want to start your own company, you want to work in abroad, you have to decide and all. Okay, that's how it is. ठीक है, चलो, I think that's enough. Other than that, प्री इंजीनियर बिल्डिंग ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू लास्ट टाइम. ये सारे प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स होते हैं विच इज कवर्ड इन माय कोर्स. आई टोल्ड यू लास्ट टाइम. स्टिल आई विल शो यू ऑल दिस थिंग्स. ओके. ओके, ये सारे आपके डेस्क स्लैब होते हैं, तो डेस्क स्लैब ऑल दिस सारे स्टील स्ट्रक्चर आजकल मार्केट में यही सारे बिल्डिंग्स चल रही. दिस काइंड ऑफ ये फ्लैट रूफ पीवी का सिस्टम से. ओके, जो भी आपके मारुति सुजुकी का शोरूम सब है ना, दे ऑल आर कंस्ट्रक्टेड. देखो ये सारे बिल्डिंग्स आपके प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स होते हैं. अगेन लाइफ इज नॉट easy when you work as a site engineer on such buildings and all. It will be a minimum 10-12 hours of the work and all when the project is at the peak. But you just imagine the amount of exposure that you're going to get here. So when you're working on such projects and all, you learn everything. पीबी का बिल्डिंग कवर हो जाएगा, आरसीसी बिल्डिंग विल बी कवर्ड, रोड विल बी कवर्ड, लैंडस्केपिंग विल बी कवर्ड, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड. बट you should have the dedication and all. You cannot expect a 9 to 5 jobs in this case. It will be a minimum 10 hours of work from morning, let's say 9 o'clock to evening 8 o'clock, 9 o'clock will be the work. But at the age of 22, 23, 24, I mean, it's okay to work for such hours. You're not 30, 40 plus and all, right? हाँ, बट जैसे जैसे आप लेट से जब आपका लोगों का शादी सब हो जाएगा, देन यू शुड लुक फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटीज लाइक ऑफिस जॉब्स एंड ऑल. यू विल गेट प्रोवाइडेड, यू शुड हैव अ नॉलेज. बट जब तक आप ऐसे काम नहीं करोगे, आपको अच्छे अच्छे कंपनी में नहीं मिलेगा. ऑल दिस आर ये आपका मुंबई का रेलवे स्टेशन है, ठीक है, तो ये सारे प्री इंजीनियर के बिल्डिंग्स होते हैं. ऑल दिस आर योर प्लान ब्रेसिंग्स एंड ऑल. तो ये सारे आपके प्री इंजीनियर के बिल्डिंग्स होते हैं. ऑल दिस थिंग्स, ठीक है. इज अ गुड स्कोप इन दिस. मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा दूंगा. आई थिंक लास्ट टाइम आई शोन यू. बट एवरी टाइम नए नए स्टूडेंट्स दे जॉइन माई live sessions and all. Just for them I'm showing you these things. Okay, so you can see these are the kind of warehouses, industrial buildings and all. And you see the opportunities, you see कैसे कैसे buildings बनते हैं market में. So these are the kind of building that you can see. ये सारे आपके प्री इंजीनियर के बिल्डिंग्स होते हैं. ऑल ये सारे प्री इंजीनियर, इसमें अच्छा स्कोप भी है. एंड ये सारे आपके देखो, ये सारे आपके कॉलम्स है, स्टील कॉलम्स है. ऑल दिस आर योर राफ्टर्स, सॉरी या राफ्टर्स एंड ऑल. ये आपके फ्लैंज ब्रेसिंग्स होते. दिस आर योर पर्लिन्स एंड यू आर गोइंग टू पुट अ शीटिंग्स एंड ऑल. ओके, सी दिस इज द काइंड ऑफ अ बिल्डिंग्स दैट आर गोइंग टू डू अ कंस्ट्रक्शन. ओके, एक क्रेन के लिए दिस इज योर व्हाट इज दैट, या दिस इज योर ब्रैकेट. ये आपका क्रेन बीम हो जाएगा, ठीक है. सी दिस आर द काइंड ऑफ बिल्डिंग्स दैट यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट एंड ऑल. देखो ये पूरा स्टील का स्ट्रक्चर है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि स्टील का स्ट्रक्चर है. आप अगर आप दूर से देखोगे, दिस लुक्स लाइक आरसीसी स्ट्रक्चर ओनली. लुक हाउ इट हैज बीन डन एंड ऑल ना. सो देयर इज अ गुड स्कोप इन दिस फील्ड एंड ऑल. ये सारे बिल्डिंग्स आप देखो, देखो रेनॉल्ट का शोरूम है, मर्सिडीज बेंज का शोरूम है, टोयोटा का शोरूम है. यू गेटिंग माय पॉइंट ना. तो इस तरह से बिल्डिंग्स बन रही. तंजानिया में बिल्डिंग बन रहा है, यूएई में ऐसे बिल्डिंग बने, इंडिया का बिल्डिंग है. अगेन इट्स अ यूएई बिल्डिंग. सी व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग है. होंडा का एक शोरूम है, कुवैत में है. Just imagine somebody working on such projects for 1 or 2 years in India, and if you get opportunity in other countries, let's say Kuwait, let's say Dubai, Qatar, and all, definitely you can go and work there and all. Only the thing is knowledge होना चाहिए. You should be ready to work for at least 10 to 12 years, 10 to 12 hours initially. नॉलेज चाहिए तो काम करना पड़ेगा ना. आप 9 to 5 जॉब करके यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट लेवल ऑफ नॉलेज एंड ऑल. दैट्स हाउ इट इज. तो ये देखो, ये सब इतने इतने बिल्डिंग, ये सब आपके बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. एशियन पेंट्स जो कंपनी है, उनका एक पूरा एक प्लांट है. तो वो सारे लोगों को इतना हाई स्टील स्ट्रक्चर एंड ऑल इज रिक्वायर्ड. सो दिस आर द काइंड ऑफ ए डेकाथलॉन जो आप देखते हो ना, ये सारे दिस इज अ पीवी बिल्डिंग्स एंड ऑल. ये आपका बासमती राइस है ना, एरोप्लेन बासमती राइस, अमृतसर का एक फैक्ट्री है. अगेन इट्स अ स्टील स्ट्रक्चर. ये बालाजी मल्टीप्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड राजकोट में है. अगेन यू से इट्स अ स्टील स्ट्रक्चर, पीवी का स्ट्रक्चर है. जेसीबी कंपनी का है. ये आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका रूफिंग, मल्टी लेयर रूफिंग सिस्टम का एक फोटो है, ठीक है. ये आपका एक कन्वेंशनल हॉल है हैदराबाद में. अगेन इट्स अ स्टील स्ट्रक्चर्स एंड ऑल, राइट. एंड दिस वन होंडा मैन्युफैक्चर, होंडा का जो टू व्हीलर आता है, होंडा एक्टिवा एंड ऑल, तो इसी कंपनी, इसी फैक्ट्री में बनाते हैं वो. तो अगेन दिस इज अ फैक्ट्री व्हाट दे हैव कंस्ट्रक्टेड एंड ऑल. So you see, पर अगर Maxis is a tire manufacturing, जैसे अपोलो टायर है, Maxis भी एक टायर है. तो these are the things, these are the opportunities that you have, and these are the companies. वो सारे चीज मैंने अपने कोर्स में एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से अच्छे. जमील इज अ इंटरनेशनल कंपनी. देखो ये जमील स्टील है, कहाँ पे,
दिस इज इन वियतनाम। फिर किर्बी इज ऑल्सो मल्टीनेशनल कंपनी। फिर इंडिया में काम करना, आप एवरेस्ट में करो, ईपैक में करो, देयर आर मेनी कंपनीज, अल्टीमेटली दे वांट समवन हु कैन हैंडल सच प्रोजेक्ट्स एंड यू सी ऑल दिस थिंग्स। मैंने क्या फ्यू डेज बैक मैंने एक वेबिनार अटेंड किया था। दे टोल्ड लाइक देखो व्हाट दे टोल्ड इज एट लाइक यहाँ पे देखो, another major point of concern is acute shortage of PB field oriented site engineers। मतलब साइट इंजीनियर्स आपको नॉर्मल आरसीसी वाले काम करने के लिए मेसन और ये सब मिल जाएंगे, G+1 G+2 बिल्डिंग के लिए। जस्ट इमेजिन अगर आप ऐसे बिल्डिंग्स को हैंडल करोगे, यू रिक्वायर अ गुड इंजीनियर टू हैंडल सच काइंड ऑफ बिल्डिंग्स एंड ऑल। ओके, इसमें कोई मेसन गिसन आके काम नहीं कर पाएगा इन स्टील स्ट्रक्चर्स एंड ऑल, दिस आर द स्टील स्ट्रक्चर्स एंड ऑल, राइट। अगर नॉलेज गेन करोगे, अच्छे अच्छे पोजिशन में अप्लाई करो, अगेन जॉब इज नॉट ईजी। आपको अभी दिखने के लिए अच्छा लगेगा और ये सब अच्छा अच्छा है, बट when you go and work there it will be 10-12 hours of your duty and all, so that's how it is यार। वो सारे opportunities हैं आपके पास, that is how you are supposed to do and all, ठीक है। so that is what I explain you, and ये सारी चीज जो मैं आपको explain कर रहा हूँ, that is covered in this PB का course, but if you are fresher don't enroll in this course, आपको पता भी नहीं चलेगा। fresher लोगों को है ही नहीं ये वाला कोर्स, ये उन्हीं लोगों के जिसको एटलीस्ट 1 या 1.5 साल का साइट एक्सपीरियंस है, तब जाके इसमें एनरोल करो। अगर आपको ये सारी चीज सीखना है तो गो फॉर माई कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला कोर्स। ये आपको अभी कोर्स आपको 8,000 रुपए का है। दिसंबर 10 से इसमें ऑफर चलेगा, ओनली फॉर 100 स्टूडेंट्स। मेरे ऐप में 40,000 डाउनलोड्स है, पर फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स आई विल गिव दिस ओनली फॉर 6,990, 7,000 में आपको मिल जाएगा। आप उस टाइम पे एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको मैक्सिमम चीजें मैंने कवर किया है, बट यू सी कि आपको किस फील्ड में जाना है एंड ऑल, बेस्ड ऑन दैट यू कैन एनरोल इन द कोर्स, बट टाइम लगेगा, 3-4 महीने का तो टाइम लगेगा ही लगेगा ये सारी चीज सीखने के लिए, ठीक है। दैट्स हाउ इट इज। चलो फाइन, दैट्स इट। 11 पीपल आर देयर, सो आई विल वाइंड इट अप। आई थिंक मैक्सिमम चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछने, आप क्वेश्चन पूछिए, एल्स विल वाइंड अप दिस पर्टिकुलर सेशन, ठीक है। एंड इफ एनीबडी वांट्स टू स्पीक टू मी, आई मीन आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, +91 8095128107 will be my WhatsApp number. You can WhatsApp me so that if you have any doubt and all, you can just speak to me. Yeah. Done. Okay. Chalo. I'll be closing this session, and maybe after 2-3 days ke baad I'll come again. You can connect to me. So I wish you people a wonderful future, and I'll see you in the next video. And download my civil brains app. अगर आपने channel को subscribe नहीं किया, just subscribe the channel so that you get lot of good videos, and download my civil brains app. If you're really interested, from December 10 onwards, we'll run the offer only for the first 100 students. There are 40,000 plus students, but everybody cannot take the offer. I cannot give for everyone. Only interested people I can give it. You can enroll in the course. Done. So good night. Bye.